Hello students, good afternoon. So today we'll be discussing about some previous year's NET question. Our topic is motion in straight line. So in this lecture, I'll be discussing some previous year's question like is from 2010 to 2016, right? Okay. So first question की जीवा देखो ये question टा 2016 NET रे आस्तेला. If the velocity of the particle v is 80 plus bt square and ab are constant, then what is the distance traveled by it in between 1 second to 2 seconds? तामने ये जो question देछि if v टा होछि instantaneous velocity. को velocity? Instantaneous velocity. So you know instantaneous velocity का formula कौन ds by dt. तो ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା क्रॉस मल्टीप्लाई कर देबा ds will be v into dt. तापर बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दबा हे जो आंसर देखो एठी जदी ds को इंटीग्रेट करबा s मिलबो तो v जगह रे वैल्यूटा पुट कर दियो 80 प्लस bt स्क्वायर इनटू dt जदी हम को इंटीग्रेट करबा फर्स्ट को सेपरेट कर दियो 80 इनटू dt इंटीग्रेशन प्लस bt स्क्वायर इनटू dt इंटीग्रेशन and go to integration करेगा 1 second to 2 second and lower limit 1 upper limit 2 बुझेला क्लियर तो एबे देखो एटा कांस्टेंट बाहर को पळासबो t into dt रो इंटीग्रेशन होची t स्क्वायर बाय 2 तो लिमिट केते अछि 1 रो 2 प्लस बीटा कांस्टेंट बाहर को चली आसबो t स्क्वायर इंटीग्रेशन इज t क्यूब अपन 3 तो लिमिट केते 1 to 2 तो आपको हमें केमते सॉल्व करिया देखो a by 2 टा एटी बाहर को चली आसला t स्क्वायर t जगह रे 2 पुट करिवा माइनस t जगह रे 1 पुट करिवा त माने 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस एठी भी सेमती b by 3 बाहर को पळा आसीबो कांस्टेंट t जगह रे 2 पुट करिवा माइनस t जगह रे 1 पुट करिवा त माने 2 क्यू माइनस केते 1 क्यू ओके कंप्लीट आंसर देखो 2 स्क्वायर माने 4 4 minus 1 is 3 so it will be 3a by 2 plus 2q is 8 8 minus 1 is 7 so it will be 7b by 3 so that is your answer so correct option is option number b बुझेला ए क्वेश्चन एते बेसी किछ डिफिकल्ट नै तमो खाली बुझिया पड़ियो क्वेश्चन कोन दैछि क्वेश्चन ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माने जो वेलोसिटी टा टाइम इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होछि बारंबार तन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रो फार्मूला इज dx upon dt और ds upon dt हम जहां भी नै परिबो ताको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिवो काने तुम क्वेश्चन पचार से डिस्टेंस केते ट्रैवल करछि इन बिटवीन 1 सेकंड टू 2 सेकंड एंड यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करछो ds विल बी v into dt v जगह रे वैल्यूटा पुट कर दे इंटीग्रेट कर दे आंसर हे जिवो हां गुड दिन से मन रखिबो लिमिट पुट करिवो 1 सेकंड टू 2 सेकंड डन आई होप इट इज क्लियर आउट अ क्वेश्चन जेबा अगेन 2016 ने आउट अ क्वेश्चन असला मोशन इन स्ट्रेट लाइन नो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो से कहिछि टू कार्स p and q starts from a point at the same time in a straight line and their position are represented by xp is equal to 80 plus bt square xq is equal to ft minus t square तमने दीटा कार रो पोजीशन गिवन अछि इन टर्म्स ऑफ टाइम गोटे रो गिवन अछि 80 plus bt square आ गोटे गिवन अछि ft minus t square से कहिछि at what time do the car have same velocity तमने जदी मु कहबे एटा p this one is q p रो पोजीशन के देछि 80 plus bt square q रो पोजीशन के देछि ft minus t square ft minus t square एठी a b कांस्टेंट एठी f b कांस्टेंट माने t रिस्पेक्ट रे दीटा जाको पोजीशन चेंज होछि बट से क्वेश्चन कोन देछि क्वेश्चन कहिछि जदी वेलोसिटी ऑफ p will be equal to velocity of q then what is the time तमने को टाइम रे p रो वेलोसिटी और q रो वेलोसिटी सेम हबो at what time do the car have same velocity को टाइम रे दीटा जाकर वेलोसिटी सेम हबो वेरी सिंपल तमे पोजीशन जानछो वेलोसिटी रो एक्सप्रेशन कोन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जस्ट डिफरेंशिएट कर दो dx by dt सो जदी आपको हमें डिफरेंशिएट करिवा सो d by dt of 80 plus bt square केते आस जिवटा को एटा a plus bt square बीटा कांस्टेंट बाहर चली आसबो t square इंटीग्रेशन 2bt 2t so it will be 2bt सेटा असला वेलोसिटी कार p रो सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ q केते आसीबो dx by dt नै जो सेम थिंग so d by dt of ft minus t square बुझ परछो
तो एबे जाको डिफरेंशिएट करबा f तो कांस्टेंट बाहर चले आसबो सो f minus 2t एटा होची वेलोसिटी ऑफ कार q रो so as per the question velocity of p is given as velocity of q त माने दीटा को हमें इक्वल खाली करबा टाइम बाहर छी देखो मैं एठी कर दउची त माने velocity of p will be equal to velocity of q velocity of p केते a plus 2bt velocity of q केते f minus 2t तो को हमें तो सॉल्व कर दबा t रो वैल्यूटा मिल जिवो एटी ऑप्शन देछि बट ऑप्शन मु मेंशन एटी करनी एमते तमे कैलकुलेट भी कर परिबो सो 2bt plus 2t will be equal to f minus a एटी 2t कॉमन नै जिवो सो b plus 1 will be f minus a then t will be f minus a upon 2 into b plus 1 एटा होस तमरा आंसर तो ये चारटा ऑप्शन देछि ऑप्शन नंबर ए देछि a minus f by 1 plus b ऑप्शन बी देछि 1 a plus f by 2 whole into b minus a ऑप्शन सी देछि a plus f by 2 into 1 plus b and option d is f minus a upon 2 into 1 plus b तो करेक्ट ऑप्शन इज आई थिंक ऑप्शन नंबर डी देखो मैच करछि okay out a question देछि 2012 NET again motion in straight line no question the motion of a particle along a straight line is given by the equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube ta mane x ta hochi position t ta hochi time respect ର position change होची and what is the retardation when velocity becomes 0 देखो it's very simple x टा के देछि position देछि 8 plus 2t minus केते t cube तो जदि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करबा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देन इट विल बी dx upon dt सो आको हम डिफरेंशिएट करबा 8 plus 12t minus tq रो डिफरेंशिएशन देखिबा केते होची जदि हमें को डिफरेंशिएशन करबा 8 रो कांस्टेंट 12t रो डिफरेंशिएशन इज 12 tq रो डिफरेंशिएशन इज 3 into t square राइट से क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0 एटा को बुझिया पड़िबो से क्वेश्चन देछि व्हाट इज द एक्सेलरेशन और कोइ परिबो रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हाट इज द रिटार्डेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0 सो v is equal to 12 minus 3t square which is given 0 then एठी हमें t रो वैल्यू फाइंड आउट करि परिबा सो 3t square will be 12 t square will be 4 and t will be plus 2 and minus 2 so time तो नेगेटिव के होबनी so t will be plus 2 then सेठी एक्सेलरेशन एबे फाइंड आउट करियो देखो एक्सेलरेशन नो फार्मूला कोन एक्सेलरेशन इज dv upon dt एक्सेलरेशन इज dv upon dt so v जगह ए वैल्यू पुट करो व्हाट इज v v is 12 minus 3t square so 12 minus 3t square ओके एटा इरेज कर दोची so 12 लो डिफरेंशिएशन 0 minus of t square 3t square differentiation with 2t so it will be minus of 60 right so kete acceleration is minus of 60 t हमर kete भारतला गु t भारतला 2 so it 2 put कर दियो minus 6 into 2 it will be minus 12 meter per second square तो से क्वेश्चन देछि रिटार्डेशन माने नेगेटिव एक्सेलरेशन त माने आंसर कोटा देखिबो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आई थिंक बुझ पाले क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन देछि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज इक्वेशन तमे को पचाछि फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0 फर्स्ट कथा डिफरेंशिएट कर दबो x को तुमको वेलोसिटी मिल जिवो राइट तो आपको जदी डिफरेंशिएट करियो तुमको एक्सेलरेशन मिल जिवो बट से कंडीशन कर देछि व्हेन वेलोसिटी इज 0 देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन जदी वेलोसिटी इज 0 एटे 0 पुट कर देले t रो वैल्यू फाइंड आउट कर दबो 2 से 2 टा एटी पुट कर दबो आंसर केते जो -12 मीटर पर सेकंड ओके देखो ए जो क्वेश्चन टा आसी 2015 NET रे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट देछि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v is given as beta into x to the power minus 2n ए क्वेश्चन टा लैंग्वेज फॉर्म रे अछि मु ताको एलाबोरेट कर दोस देखो से क्वेश्चन कहछि वेलोसिटी टा डिपेंड करछि x ऊपर एठी बीटा आ n होछि कांस्टेंट मन रखियो बीटा आ n देछि कांस्टेंट आ x टा होछि तार पोजीशन ए पोजीशन रेस्पेक्ट रे वेलोसिटी टा चेंज होछि जो वेलोसिटी टा गिवन अछि बीटा into x to the power minus 2n से क्वेश्चन पछाछि व्हाट इज द एक्सेलरेशन आगे क्वेश्चन टा बुझो क्वेश्चन देछि व्हाट इज द एक्सेलरेशन देखो एक्सेलरेशन नो फार्मूला तुम जानछो
acceleration is equal to dv upon dt. ओके तो गोटे काम कर ये टाइप क्वेश्चन केमती सॉल्व करिवो तमे x फॉर्म को आनिवो ता माने ऊपर dx तळे dx मल्टीप्लाई कर दियो सो dx upon dt तमे जानिछो v is equal to dx upon dt तमे ए जगह कोन लिखि दबो v into dv upon dx एटा होची एक्सेलरेशन क्लियर बट ऑप्शन आगे देखिवो हमको ठी कोन करिया पड़िबो ना वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करियो विथ रिस्पेक्ट टू x देखो v के दिया है v बीटा into x to the power minus 2n so dv by dx केते आसीबो कुआ कोति को डिफरेंशिएट करबा सो बीटा तो कांस्टेंट so it will be beta into minus of 2n into x to the power minus 2n minus 1 and तुम जानछो differentiation of a function let x to the power n is a function ता differentiation केते n into x n minus 1 तुम जानछो ओके एटा होची त माने केते चली आसला माइनस ऑफ 2 बीटा n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 तापर एठी पुट कर दियो v रो वैल्यू टा को एठी पुट करो फर्स्ट बीटा इनटू x टू द पावर माइनस 2n इनटू dv upon dx के दिए छी माइनस 2 बीटा n इनटू x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 बुझला मैं पार्ट इरेज करछि तुम नोट कर दियो पैरेलली नोट करथबो त माने ये टोटल आंसर टा केते हिजबो देखो एटा देखो बीटा 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 स्क्वायर ओके त माने माइनस 2n को बाहर को आन दियो माइनस 2n बीटा स्क्वायर देन x टू द पावर माइनस 2n देछि अगेन पुनी x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 देछि त दीटा को ऐड कर दबो त टोटल आंसर केते आसीबो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1 एटा होछ हमर आंसर देखो ऑप्शन कोड दिया है ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बुझि गले क्वेश्चन के नै तुमको वेलोसिटी टी फॉर्म रे दिथले इजी हेताना हम dv by dt करथाना किंतु x फॉर्म रे देछ माने तुमको से फॉर्मेट को आनिया पड़ी देन एक्सेलरेशन dv upon dt लिख देबो पूरा dx तळ dx मल्टीप्लाई करिवो dx by dt को v लिख देबो देन v रो वैल्यू टा पुट करिवो पुनी आउथरे v को डिफरेंशिएट कर देके आ गुड एक्सप्रेशन लिख देबो दीटा एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देबो आंसर हे देखो ए जो क्वेश्चन देछि 2013 NEET रास्ताला बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इजी क्वेश्चन देछि से कहिछि द डिस्प्लेसमेंट x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of force is related to time as t is equal to under root of x plus 3 find the displacement when its velocity is 0 देखो ये जो एक्शन ऑफ फोर्स मास ये सब किछि एबे काम रे आसीओनी से क्वेश्चन सिंपली देछि से कहिछि डिस्प्लेसमेंट आउ टाइम x टा होछि डिस्प्लेसमेंट t होछि टाइम ता भीतर गोटे रिलेशन गिवन अछि से क्वेश्चन कहिछि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट x रो वैल्यू केते रहउछि सो दैट वेलोसिटी विल बी 0 क्वेश्चन देछि व्हेन वेलोसिटी इज 0 व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एति के बुझियार अछि टाइम t आउ x भीतर गोटे रिलेशन गिवन अछि जोटा कि t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 पचारछि व्हाट इज x or what is the position or find the displacement when velocity is 0 देखो आगे हम लिखि देबा t is equal to under root of x plus 3 एपटे under root of x will be t minus 3 both side की स्क्वायर कर दियो जदि स्क्वायर कर देबो एटा केते आसीबो x x will be equal to t square plus केते 9 minus केते 60 ए माइनस b रो होल स्क्वायर पुट कर दियो यदि x एटा होची त वेलोसिटी रो फार्मूला कोन dx upon dt यदि आपको हम डिफरेंशिएट करबा यदि फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करछ t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 हमर आंसर कोन आसीबो 2t 9 होची कांस्टेंट 0 माइनस ऑफ केते 6 ता माने हमर क्वेश्चन हम कोन आसी गला ठी वेलोसिटी केते आसी गला 2t minus 6 as per the question velocity हमर केते दैछि 0 ता माने 2t become केते 6 t will be how much 3 हम टाइम होची 3 पचारछि x केते देखो एठी पुट कर दियो x रो फार्मूला हम एटा मिलथिला t जगह रे पुट करला 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 into 3 ता माने केते होला 9 प्लस 9 माइनस केते 18 एटा कैंसिल हेजबो आंसर केते हेजबो 0 ऑप्शन नंबर बी आई होप इट इज क्लियर वेरी इजी क्वेश्चन आराम से तुम कर परिबो
ओके इट इज क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ओके देखो एटा ଗୋଟେ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि एनईटी 2010 ने आस्थिला से क्वेश्चन कहछि if a particle moves a distance x in time t as per the equation which is given as x is equal to t plus 5 whole to the power minus 1 question is the acceleration is proportional to what there are four options v to the power minus 3 by 2 s square or x square koi paribo s to the power minus 2 or x to the power minus 2 v to the power 2 by 3 देखो ये क्वेश्चन के हम सॉल्व करिवा x दे देछि केते t plus 5 to the power minus 1 जदि फर्स्ट हम वेलोसिटी फाइंड आउट करिवा ताको हम डिफरेंशिएट कर देबा dx upon dt तो d by dt of t plus 5 to the power minus 1 और आंसर केते हबो minus of t plus 5 to the power minus 2 ओके जदि हम एक्सेलरेशन देखिबा एक्सेलरेशन होची डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी के तमे डिफरेंशिएट करिवा d by dt of velocity केते अछि एटा velocity minus t plus 5 to the power minus 2 राइट ताको डिफरेंशिएट करले केते आसीबो 2 into t plus 5 to the power केते minus 3 इज इट क्लियर ताने हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन मिलला हमें एमती दीटा इक्वेशन को एमती कंपेयर करबा सो दैट हमको ऑप्शन सहित मैच करबा पड़िबो एक्सेलरेशन का सहित प्रोपोर्शनल करूची देखो केमते को सॉल्व करबा आंसर आडू केम जिबा कान आंसर तो मैच करूनी एठी एक्सेलरेशन इज 2 होल इनटू t plus 5 to the power minus 3 t plus 5 केते होची ओनली x हमने 2 x to the power minus 3 सेमते किछ तो नाही एठी ऑप्शन सेटपे हम कोन करबा एटा होची वेलोसिटी एटा होची एक्सेलरेशन म आउथरे एपट लिखि दोची v is equal to minus t plus t to the power minus 2 and एपट एक्सेलरेशन को लिखि दोची आउथरे acceleration is 2 into t plus 5 to the power minus 3 clear तो एबे आको लिखि परिबा minus 1 by t plus 5 whole square एटा तळु कसले प्लस हे जाउची ता माने मु कहि परिबे t plus 5 whole square will be minus 1 by v ता माने t plus 5 will be minus 1 by v under root Similarly, एपटे यदि फाइंड आउट करबा हमें देखिबा एक्सेलरेशन इज 2a होल इनटू t plus 5 to the power 3 by 2 तो एठी हम काम करबा t plus 5 to the power minus 3 will be equal to a by 2 right and एटा लिखि परिबा 1 by t plus 5 to the power 3 is equal to a by 2 तामने t plus 5 to the power 3 मु कहि परिबे 2 by a तामने t plus 5 will be equal to 2 by a to the power केते 1 by 3 कहि परिबे तामने ए दुटा इक्वेशन को एबे हम कंपेयर करबा हमको एक्सप्रेशन मिल जिवो का सहित इक्वेशन 1 और 2 को यदि कंपेयर करबा हम एक्सेलरेशन रो एक्सप्रेशन पाई जिबा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी जब दीटा हम इक्वेशन को कंपेयर करबा आई थिंक ऑप्शन है जो v to the power 3 by 2 देखो केमते होउची दीटा खाली कंपेयर करिया कथा किछ नै देखो एठी हम लिख परिबा -1 by v under root will be equal to 2 by a to the power केते 1 by 3 राइट तमे ओटे काम करो बोथ साइड एटा को लिख परिबा -1 by v to the power half एटा अछि 2 by a to the power केते 1 by 3 ओके बोथ साइड जदि क्यूब नै जिबा तो 1 by v to the power केते हे जिवो 3 by 2 will be equal to 2 by a ओके यदि आपको हमें सॉल्व कर दबा तो a टा का से प्रोपोर्शनल हे जिवो v to the power 3 by 2 देन ऑप्शन नंबर ए ओके एक क्वेश्चन टिके कैलकुलेटिव अछि तुमको डिफरेंशिएशन को बुझिया पड़ियो और देखियो सब ऑप्शन को देख के मैच करियो ऑप्शन जदि देथंता इन टर्म्स ऑफ लाइक s फॉर्म रे अछि बट s स्क्वायर अछि s टू द पावर -2 अछि अलगा किछ s फॉर्म रे थातन देन हम कर परथन जेतु नाही हम कोन करबा दुटा इक्वेशन को कंपेयर करके आंसर को फाइंड आउट करबा आई थिंक एटा बुझ परछो ओके ओके देखो ओटा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एनईटी 2011 ने क्वेश्चन आस्तला बोले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्री फॉल रो क्वेश्चन टा a body standing at the top of a tower of 20 meter height drops a stone what is the velocity with which it hits the ground right acceleration due to gravity दे देछि 10 और 9.8 भी नहीं परिबो
देखो ये क्वेश्चन टा एक्चुअली फ्री फॉल कांसेप्ट रो क्वेश्चन टा फ्री फॉल कांसेप्ट टा मुझे कहि दोस देखो लेट एटा गोटे टावर अछि एट गोटे बॉल टे फ्री फॉल करा होछि तमने सब बळे अज्यूम करिवो इनिशियल वेलोसिटी केते 0 ए टावर रा हाइट होछि h से कहिथिबो बॉडी ग्राउंड रे पडुछि तार वेलोसिटी केते एटा क्वेश्चन देछि तो फ्री फॉल लो जो इक्वेशन लिखियो मो फ्री फॉल लो टे कांसेप्ट कहि दो जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमर अछि v u plus at and v square minus u square is equal to 2as and s is equal to ut plus half it square एटा भी फ्री फॉल ले एप्लीकेबल काहे कि फ्री फॉल एप्लीकेबल जेतु एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट तमने एटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बट जेतु एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एठी हमें ए जगह रे खाली g पुट करिवा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबो फ्री फॉल लो क्वेश्चन जत सॉल्व करिवो साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपोर्टेंट साइन कन्वेंशन न मो ट्रिक तुम कोस देखो साइन कन्वेंशन रो ट्रिक होची जो रेफरेंस पॉइंट तुम जोठू स्टार्ट करिथिलो लेट एठू बॉडीटा फॉल करछि तन इनिशियल वेलोसिटी केते 0 तम एठी वेलोसिटी टा पचारछि साइन कन्वेंशन होची 0 वैल्यूटा को सब बळे नेगेटिव न ऑलवेज फ्री फॉल केस हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन केस हो 0 वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव एटा को मन रख ओके देन जेतले हम डिस्प्लेसमेंट टा होची तळु करसे माने नेगेटिव ऊपर गले पॉजिटिव तमने जदि अपवर्ड में जाउचे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डाउनवर्ड गले डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मन रहिला एटा क्लियर ओके देखो हमें एठी से क्वेश्चन कहि छी हाइट टा दे देछि हाइट के देछि हाइट आई थिंक देछि 20 मीटर एबे एठी हम ओटे काइनेमेटिक्स इक्वेशन पुट करि परियो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 2s तो एठी v स्क्वायर माइनस u टा केते अछि 0 विल बी 2 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते मु कहितले g टा केते अछि 10 10 माने केते एठी -10 नबो 0 वैल्यू सब नेगेटिव एंड s जेतो हम एठू स्टार्ट करछे एटा हमर रेफरेंस पॉइंट हम तळु को जाउछे h टा भी नेगेटिव तबे केते बटा -20 तमे तमे एमटी भी लिखि परिबो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इनटू -g इनटू -h एमटी भी लिखि परिबो तमने टोटल आंसर केते हिजो v स्क्वायर विल बी माइनस माइनस प्लस हे गला 20 into 10 200 into 2 400 तो v केते हिजो प्लस माइनस 20 then option is this one right option is 20 but जदि क्वेश्चन सेपरेट देखो प्लस 20 की माइनस 20 देखो डाउनवर्ड जाउची एटा होची रेफरेंस पॉइंट वेलोसिटी केते होची प्लस 20 और माइनस 20 साइन कन्वेंशन कहिथिले सब अपवर्ड हेले प्लस डाउनवर्ड हेले माइनस राइट गले प्लस लेफ्ट गले माइनस 0 वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव s रो वैल्यू ऊपर गले प्लस तळु गसले माइनस ओके आई थिंक एटा बुझ परलो ओके देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा 2011 में क्वेश्चन आस्तला ए पार्टिकल कवर्स half of its total distance with a speed of v1 and rest half of the distance with a speed of v2 what is the average speed there are four options एटा एवरेज स्पीड कांसेप्ट क्वेश्चन टा से क्वेश्चन टा को आगे बुझा से कोन कहै छी ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस लेट मु कहै छी a is a point जोटा कि तम होम लेट b is a point जोटा कि तम स्कूल a रु b भितरे किछ गोटे डिस्टेंस अछि लेट a रु b भितरे डिस्टेंस इज s ओके से कहै छी हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस हाफ माने एटा होची मिडिल पॉइंट तो ए डिस्टेंस टा को s/2 नै परिबो ए डिस्टेंस टा को s/2 नै परिबो तन हाफ ऑफ द डिस्टेंस जाउची को स्पीड रे v1 स्पीड रे और रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस जाउची v2 स्पीड रे से पचार छी एवरेज स्पीड केते देखो एवरेज स्पीड रो फार्मूला होची टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम केते टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो एठी टोटल डिस्टेंस केते हमर s बट टोटल टाइम इंडिविजुअल टाइम एटा होची t1 एपटा होची केते t2 तन t1 प्लस केते लिखिबा t2 yes or no तमे जानि छ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तमे टाइम रो फार्मूला कोन जानलो डिस्टेंस अपॉन स्पीड एटा को मन रखियो सो टाइम ता माने एठी t1 जगह कोन लिखिबा डिस्टेंस एठी केते अछि s/2 अपॉन केते v1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्पीड केते अछि v1 प्लस एपटे सेमते डिस्टेंस केते अछि s/2 तार स्पीड केते v2 देखो s s कैंसिल इज एठी
तामाने आंसर केते हिजबो 2 into v1 by v1 plus v2 आको तमे सॉल्व करि परबो इजीली ओके v1 टा ऊपर चली आसबो एठी ओके s/2 s कैंसिल हिजबो हाफ चली आसला तो एलसीएम नै गेले v1 v2 हिजबो ऊपर केते आसीबो v1 plus v2 ताको रिवर्स करथिले 2 into v1 v2 by v1 plus v2 बुझ पालनी देखो कर दबा एटा s अछि तमे s/2 टा को कॉमन नै जा तो 1 by v1 plus केते हला 1 by v2 तो s कैंसिल हे गला ए 2 टा ऊपर को पळेबो ए 2 टा ऊपर को जो मैं लिखि दोछि 2 ऊपर गले सो इट विल बी 2 1 by v1 plus केते 1 by v2 तो आको जे हम सॉल्व करबा केमते सॉल्व करबा एठी एलसीएम नै जा v1 v2 तो एठी के चले आसबो v1 plus v2 बुझेला तो ए पार्ट टा ऊपर को चल जाय मल्टीप्लाई हिजबो 2 into v1 v2 by v1 plus v2 एटा होची ऑप्शन एटा ऑप्शन नंबर नॉट बी sorry option number C 2 into v1 v2 by v1 plus v2 clear ओके एबे देखो जदि क्वेश्चन टा आ गोटे फॉर्मेट रे थिबो जदि क्वेश्चन कहिथबो ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल टाइम डिस्टेंस अगर जदि टाइम थिबो a particle covers half of its total time with a speed of v1 and rest of time with a speed of v2 then what is the average speed एटी average speed देखो कोन हबो से कहिछि लेट a और b दीटा पॉइंट अछि तमे a रु b के जाउछ टोटल टाइम नोच t से कहिछि हाफ ऑफ द टाइम एटा c गोटे पॉइंट हाफ ऑफ द टाइम माने एटा t/2 एटा t/2 देखो मो डिस्टेंस बेसर कोनी टाइम माने हाफ ऑफ द टाइम तमे जाउछो केते स्पीड रे v1 स्पीड आ रेस्ट ऑफ द टाइम केते स्पीड रे जाउछो v2 से सेया क्वेश्चन कहछि पार्टिकल कवर करछि हाफ ऑफ द टाइम रे v1 डिस्टेंस सॉरी v1 स्पीड रे जाउछि हाफ ऑफ द टाइम नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम जाउछि v2 स्पीड रे से भी क्वेश्चन कहछि व्हाट इज द एवरेज स्पीड देखो एवरेज स्पीड रो फार्मूला कोन कहथिली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो लिखबा टोटल डिस्टेंस केते जदि टाइम एठी t/2 अछि और स्पीड इज v1 तो डिस्टेंस एठी s1 हो तो एठी डिस्टेंस टा केते हिजबो को स्पीड इनटू टाइम तो v1 इनटू t/2 सिमिलरली एठी डिस्टेंस भी केते हो सेकंड केस रे डिस्टेंस हो v2 स्पीड इनटू t/2 राइट हम जानछो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो एठी पुट कर दियो टोटल डिस्टेंस हमर केते s1 plus s2 टोटल टाइम के दिया छै t s1 जगह केते पुट कर दबा ठीक v1 into t1 by 2 plus s2 जगह केते v2 into t v1 into t by 2 एटी v2 into t by 2 ओके अपन केते टाइम देखो टाइम कैंसिल हो गेला तो टोटल आंसर केते आसीबो v1 plus v2 by 2 ऑप्शन नंबर आई थिंक 1 तमने एटी कंक्लूजन कम पाइलो जदि टाइम इक्वल टाइम इंटरवल ले अलग अलग स्पीड v1 v2 जाउची एवरेज स्पीड विल बी v1 plus v2 by 2 ओके जदि इक्वल डिस्टेंस रे अलग अलग स्पीड जाउची v1 v2 देन एवरेज स्पीड विल बी 2 into v1 v2 by v1 plus v2 आई होप इट इज क्लियर